Just a minute, it is taking some setting on the meeting on YouTube live. Hello, namaste. Yeah. नमस्कार सभी को। नमस्कार, नमस्ते सबको नमस्ते। और बस हम शुरुआत कर रहे हैं। और अतुल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वे आप आज की कार्रवाई शुरू करें। ओके। रेवा लॉज वडोदरा, रोहित लॉज अमदावाद અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત આજના ઈ પ્રવચન એપી સિનેટ ના જીવન અને તેમના કાર્યોના વક્તા શ્રી નંદકુમારજી, શ્રી નવીન કુમારજી અને શ્રી રમેશભાઈ ડોલિયા તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વે સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું। આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત કેશવરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે। કેશવરબેન। Yes. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. No, he is also one with every other. No, he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાના સંચાલન માટે આમંત્રિત કરું છું। તરલભાઈ। सभी का नमस्कार। और जैसा कि आपको मालूम है, आज नंद कुमार राउत जी, नवीन कुमार जी और रमेश डोलिया तीनों स्पीकर हमारे साथ हैं। और एपी सिनेट की जो कि फर्स्ट जनरेशन थियोसॉफिस्ट थे और जिन्हें महात्मा के सबसे अधिक पत्र मिले थे, उनके बारे में हम आज लाइफ एंड वर्क्स ऑफ एपी सिनेट के बारे में नंद कुमार जी से सुनेंगे। संक्षिप्त सा परिचय नंद कुमार राउत जी का। उन्होंने भी सिविल किया है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से। 2015 में पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला से रिटायर हुए हैं। वे अकोला लॉज में 1 दिसंबर 1997 से मेंबर हैं और अकोला लॉज के ही ट्रेजरर 2008 से 2016 तक रहे हैं। वे वहां के प्रेसिडेंट भी रहे 2016 से 2019 तक। 2016 से 2019 तक वे मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट रहे और अभी भी 2019 से लगातार वे इंडियन सेक्शन के वाराणसी से नेशनल लेक्चरर हैं। हम उन्हें सुनते रहते हैं। तो आदरणीय नंद कुमार जी, मंच आपका है। आज के विषय पर शुरू करिए। धन्यवाद। Good evening everybody. Today's discussion or today's topic is life and works of AP Sinnett, the first generation Theosophist. We all know the name AP Sinnett. When we study the theosophical literature or we hear the name during any speech or discussing the theosophical subjects. AP Sinnett was the first generation Theosophist. His full name was Alfred Percy Sinnett. He was born on 18th January 1840 in London and educated at London University School. His father died while he was quite young. He was also a journalist and he was one of the main recipients of the Mahatma letters. He was also vice president of the Theosophical Society Adyar and he married to Patience Edenser
on 6th of April 1870 at St. John's Church, Notting Hill. From 1859 to 1870, Sinnett wrote articles. He being a journalist, he wrote articles for the Morning Chronicles, a daily gazette, and Manchester Guardian in England. He then went to Sweden as a special correspondent for the Daily News. He also went to the Ireland for the Daily Telegraph. In this way, he traveled throughout the European country, also in India. During 1870, Sinnett had become an editorial writer for the Evening Standards. In 1872, George Allen, the proprietor of the Anglo-Indian newspaper, which was the pioneer, he offered the editorship to the AP Sinnett. He was impressed, AP Sinnett was impressed with the belief that the only way of doing really well in journalism was to get an editorial appointment in India. So he resigned his previous position in Pioneer and left for India, arriving at Allahabad by the end of 1872. During the years in India, that is 1872 to 1883, Sinnett had a good income, a pleasant social life, and professional recognition. He and his wife lived in Allahabad, where the Pioneer was based. And during hot weather of the summer, they lived in Simla. In the year 1875, during his visit to London, Sinnett had become interested in spiritualism. One of his friends, Hubbard Stack, he had told him about the publication of Madame Blavatsky's first book, Isis Unveiled. And in 1879, Sinnett read in newspaper that H.P. Blavatsky and Colonel Olcott both have arrived in Bombay. A.P. Sinnett was knowing that both Blavatsky and Colonel Olcott, they were spiritualists. Hence, he wrote them a letter expressing his desire to become acquainted with them and his willingness to publish any information which they like to give him about their mission in India. In the month of December 1879, the founders visited Mr. and Mrs. Sinnett at their house in Allahabad and stayed there as a guest for 6 weeks. There, Colonel Olcott delivered a speech on Theosophy at the Mayo Hall with Mr. Hume, A.O. Hume. And at that time, Mrs. A.O. Hume was in chair for that assembly. Madame Blavatsky charmed
she also charmed the Sinnett's friends at the dinner party. This visit began a lifelong association with them and the Theosophical Society. In the year 1880, Madame Blavatsky and Colonel Alcott paid second visit to AP Sinnett. But at this time, the place was changed. They paid visit at Sinnett's summer home in Simla. At the time, many wonderful phenomena took place. Mr. Sinnett described these phenomena in his book, The Occult World. And from that time only, the famous correspondence with the Mahatmas began. Sinnett wrote in his words as, "One day, I asked Madame Blavatsky whether I write a letter to one of brothers explaining my views and whether she could deliver the same letter to the Mahatma. On this, Madame Blavatsky said that at any rate, I would try. Then I wrote a letter addressing it to the unknown brother, and gave it to the Madame Blavatsky to see if any result would happen after. It was a happy inspiration that induced me to do this. For out of that small beginning, it has arisen the most interesting correspondence in which I have ever been privileged to engage." These were the words of Brother AP Sinnett. The unknown brother, means Mahatma, answered, was known as Mahatma Kuthumi. And from the time there was a correspondence that took place from 1880 to 1885. The letters from Mahatma, which were received by AP Sinnett and his friend Mr. A.O. Hume, they were published in 1923 under the title The Mahatma Letters to AP Sinnett. Most of the letters were transmitted by psychic means and precipitated by different chelas, such as Madame Blavatsky, Damodar K. Mavankar, and others. AP Sinnett was extremely eager for immediate personal contact with the Mahatma Kuthumi. And on 19th October 1880, AP Sinnett received an astral visit by Mahatma Kuthumi. AP Sinnett described this experience as follows. He described that experience, that visit of Mahatma. He said, "I saw KH in astral form on the night of 19th October 1880, waking up for a moment, but immediately afterwards being rendered unconscious again in the body and conscious out of the body. In the adjacent room, in the adjacent dressing room, where I saw another brother afterwards,
identified with one called Serapis, Mahatma Serapis, by Alcott. Alcott told he was Serapis, the youngest of the Chauhan. And about 4 years later, William Q. Judge asked Mr. Sinnett about this, and Sinnett reported the following. One night, he was lying on his bed in India, when suddenly awakening, he found Mahatma Kuthumi standing by his bed. He rose half up when Mahatma Kuthumi put his hand on Sinnett's head, causing him to fall at once back on the pillow. He then found himself out of his body, and in the next room, talking to another adept who he describes as an English or European with light hair, fair, and of great beauty. Why the Mahatmas agreed to enter in correspondence with him and Mr. Hume, the Mahatma Kuthumi wrote, "Your sagacity means wisdom, by wisdom, my kind friend will have suggested long ago that it is not so much because of your combined personal virtues, through Mr. Hume, I must confess, has run up a large claim since his conversion, or my personal preferences for either of you as for the other, and very apparent reasons. Of all our semi-chelas, you two are the most likely to use the facts given to you for the general good. You must regard them to be received in trust for the benefit of the whole society, to be turned over and employed and re-employed in many ways and in all ways that are good. If you, means Mr. Sinnett, if you will delight your trans-Himalayan friend, don't bother to go a month without writing a piece, long or short, for the magazine and then releasing it as a pamphlet, as you call it. This was the words of Mahatma Kuthumi. In addition to the numerous letters to Sinnett that were in his possession, they were published in the Mahatma letters to the AP Sinnett, Here, my first part of the discussion, I end with this first part. Thank you. Thank you so much, Rawatji. Thank you. And it was really wonderful. और मैं आमंत्रित करता हूं अब रमेश डोलिया जी को। रमेश जी के बारे में चंद शब्द में जरूर कहूंगा कि वे एक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वे LIC ऑफ इंडिया में कार्यरत थे और वहां पर डिविजनल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुए। 2010 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ अहमदाबाद लॉज से वो जुड़े और अहमदाबाद लॉज के प्रेसिडेंट भी हैं।
उन्होंने ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन वगैरह के लिए काफी सारे व्याख्यान दिए हैं और बार बार हमें गुजरात फेडरेशन में और त्रिवेणी पर भी आते रहते हैं। तो आइए, आपका स्वागत। હેલો जी। શ્રી એપી સિનેટ નું જીવન અને કાર્ય, પહેલી પેઢીના થિયોસોફિસ્ટ. થિયોસોફીની દુનિયામાં શ્રી એપી સિનેટ નું નામ એ ખૂબ જાણીતું નામ છે. આપ ચાહે થિયોસોફીના સાહિત્યનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હો અથવા થિયોસોફીના કોઈ વિષય પર ભાષણ ચાલતું હોય કે કઈ ચર્ચા ચાલતી હોય, એમના નામનો રેફરન્સ જરૂર આવે જ. તેઓ થિયોસોફીમાં પ્રથમ પેઢીના થિયોસોફિસ્ટ હતા. તેઓનું પૂરું નામ આલ્ફ્રેડ પેર્સી સિનેટ હતું. તેઓનો જન્મ 18 જાન્યુઆરી 1840ના રોજ લંડનમાં થયો હતો અને તેઓનો અભ્યાસ પણ લંડન યુનિવર્સિટી સ્કૂલમાં થયો. પરંતુ તેઓએ બચપણમાં જ પિતૃછાયા ગુમાવી દીધી હતી. આપણે તેને ભૂલી ન શકીએ કારણ કે તે તેમના મહાત્માના પત્રો મહાત્માના પત્રો મેળવનારામાં એમનું મોખરાનું નામ છે. તેઓ વ્યવસાય પત્રકાર હતા અને થિયોસોફીમાં પણ આગળ વધતા વધતા તેઓ અડિયાર થિયોસોફી સોસાયટીમાં વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પદ સુધી પણ પહોંચી ગયા હતા. તેઓના લગ્ન 6 એપ્રિલ 1870ના રોજ પેલિયન્સ એન્ડેસર સાથે સેન્ટ ચર્ચમાં નોટિંગ હોલમાં થયા હતા. 1859 થી લઈને 1870 એટલે કે 11 વર્ષ સુધી સિનેટે ઘણા બધા જગ્યાએ પોતાના આર્ટિકલ્સ લખ્યા છે, જેમાં માન્ચેસ્ટરનો મોર્નિંગ ક્રોનિકલ, બર્મિંગહામનો ડેલી ગેઝેટ, માન્ચેસ્ટર ગાર્ડિયન અને આ પછી સ્વીડન અને આયર્લેન્ડમાં પણ એમણે સેવાઓ આપી. 1872માં એટલે કે ઇન્ડિયન સમાચાર પત્ર એંગ્લો ઇન્ડિયને એક સમાચાર પત્ર ધ પાયોનિયર હતું, એના તંત્રી પદની ઓફર એમને કરી. એમને એમ લાગ્યું કે જર્નાલિઝમમાં સમાવું, આ કેમ એમને લાગ્યું એ લાગે છે કે કુદરત એમને થિયોસોફી બાજુ લાવવા માંગતા હશે, પણ એમને એમ લાગ્યું કે જર્નાલિઝમમાં જો સુંદર અને સફળ કાર્યવાહી કરવી હોય તો ભારતમાં મારે આ કાર્ય કરવું જોઈએ અને સારી નામના મળે એને માટે પણ એ જરૂરી છે. આથી તેઓએ પાયોનિયરમાંથી રાજીનામું આપ્યું અને 1872માં ભારત આવ્યા અને અલ્હાબાદમાં એમણે પોતાનો નિવાસ કર્યો. 1872 થી 1883 સુધી એટલે 11 વર્ષ સુધી તેઓએ બહુ સુંદર આવક થઈ. સામાજિક સંબંધો પણ બહુ સુંદર રહ્યા, વ્યવસાયમાં પણ બહુ સુંદર એમને નામના મળી. આમ બહુ સારો પીરિયડ રહ્યો અને આમ અલ્હાબાદમાં રહેતા હતા પણ ઉનાળાની ગરમીમાં પછી સિમલા ચાલી જતા હતા. 1875માં તેઓની ઇંગ્લેન્ડની મુલાકાત સમયે તેઓ અધ્યાત્મના ક્ષેત્રની સંબંધમાં આવ્યા. મિત્રોએ તેમને મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીના પ્રથમ પુસ્તક આઇસિસ અનવેલ્ડનો પરિચય કરાવ્યો. 1879માં સમાચાર પત્રમાં વાંચ્યું કે મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને કર્નલ ઓલકોટ મુંબઈ આવ્યા છે. તેઓ જાણતા હતા કે બંને આધ્યાત્મિક વ્યક્તિત્વ છે. આથી તેઓએ પત્ર દ્વારા એમને સંપર્ક કર્યો અને જણાવ્યું કે તેઓ તેમની સાથે કાર્ય કરવા માંગે છે. તેમના મિશન વિશે કંઈ ભારતમાં જણાવવું હોય તો પણ તે માટે પણ મદદ કરવાની તેમણે ઓફર કરી. ડિસેમ્બર 1879માં એનાથી આગળ વધ્યા કે ડિસેમ્બર 1979માં થિયોસોફીના સ્થાપકો તેઓને મળ્યા, અલ્હાબાદ આવ્યા અને તેમની સાથે મહેમાન તરીકે 6 અઠવાડિયા સુધી રહ્યા. કર્નલ ઓલકોટે મેયો હોલમાં પ્રવચન પણ આપ્યું અને મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીએ બધાને પ્રભાવિત કર્યા. આમ બસ તેઓનું થિયોસોફી સાથે જીવનભરનું જોડાણ થયું. 1880માં મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને કર્નલ ઓલકોટ તેઓને સિમલામાં મળ્યા. આ વખતે કેટલાક બનાવો અદ્ભુત બન્યા.
આ બધા બનાવોને એમણે ધ ઓકલ્ટ વર્લ્ડમાં વર્ણ્યા છે. પણ આ સમયથી જ એમને માસ્ટર સાથેના પત્ર વ્યવહારનો સિલસિલો શરૂ થયો, જે આપણા માટે બહુ અગત્યનો છે. શ્રી સિનેટજી જણાવે છે કે એક દિવસ તેઓએ મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીને પૂછ્યું કે તે પોતાના મંતવ્યો દર્શાવતો પત્ર આપે તો તે મહાત્મા સુધી પહોંચાડશે. તો મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીએ કહ્યું કે તેઓ પૂર્ણ પ્રયત્ન કરશે. એટલે મિસ્ટર સેનેટે અનનોન બ્રધર્સના નામે લખેલો પત્ર આપ્યો. પણ આ એક નાનકડી શરૂઆત કઈક ઉત્તેજિત ક્ષણે એમણે જે કરી તે આગળ વધતા એક સુંદર અને ખૂબ જ વિશાળ રસપ્રદ પત્રવ્યવહારની હારમાળામાં સર્જાઈ જશે એ માટે એમને ગર્વ છે. ધ અનનોન બ્રધર એટલે કે જે કુતુમીને નામે જાણીતા છે, એમને સને 1880 થી 85 સુધી પત્ર વ્યવહાર થયો. સેનેટ અને હ્યુમને જે કંઈ પત્રો લખ્યા તે બધાને ભેગા કરીને પુસ્તક રૂપે પ્રકાશિત કર્યા, જે માસ્ટર લેટર્સ ટુ એપી સિનેટ એ પુસ્તકમાં પ્રકાશિત થયા. મોટાભાગના પત્રો માનસિક માધ્યમથી આવ્યા હતા, પણ મિસ્ટર સેનેટ મિસ્ટર કેએચ ને મળવા માટે બહુ જ આતુર હતા. એમની મુલાકાત થાય છે. એ જણાવે છે કે 19 ઓક્ટોબર 1880 ની રાત્રે માસ્ટર કેએચ ને એમણે એસ્ટ્રલ ફોર્મમાં જોયા. ઉઠવા જાય ત્યાં બેહોશીમાં પાછા પડી ગયા, પણ શરીર બેહોશ હતું. પોતે શરીરની બહાર પણ જાગૃત રીતે બહાર આવ્યા અને એક બીજા રૂમમાં મહાત્માને જોયા, જેને કર્નલ ઓલ્કોટે સિયાસીસ નામથી જાણતા હતા. 94માં સૌથી નાના હતા. એ 4 વર્ષ પછી સિનેટજીને આ બાબતમાં પૂછ્યું ત્યારે એમણે જણાવ્યું કે એક રાત્રે ભારતમાં પથારીમાં સૂતેલા હતા. અચાનક જાગૃત થતા તેમણે માસ્ટર કેએચ ને પથારી પાસે ઉભેલા જોયા. ઉઠવાનો પ્રયત્ન કર્યો. માસ્ટરે એમના માથા પર હાથ મૂક્યો એટલે પાછા સૂઈ ગયા. બોડીથી સૂઈ ગયા, પણ બીજી રીતે જાગૃત હતા. એટલે ત્યાર પછી શરીરમાંથી બહાર નીકળીને આગળના રૂમમાં એક બીજા એડેપ્ટ સાથે વાત કરી રહ્યા હતા. એક અંગ્રેજ કે યુરોપિયન, જેનું વર્ણન કરતા કહે છે કે ચળકતા વાળ, ગોરો વાન અને ખૂબ સુંદર એમનો વ્યક્તિત્વ હતું. મહાત્મા કેએચ તેમની અને હ્યુમ સાથે પત્ર વ્યવહાર કરતા કેમ સહજ મળ્યા તે મહાત્મા કેએચ જણાવે છે કે શા માટે એમણે પત્ર વ્યવહાર કર્યો. કે તમારી દૂરદર્શિતા એટલે સેગારિટી મિત્રો, તમારા સંયુક્ત ગુણોની સામે આ કંઈ નથી. મિસ્ટર હ્યુમના પાત્રથી સ્વીકાર કરવો જોઈએ કે તેમના રૂપાંતરણ પછી મોટા દાવા કરવામાં આવે છે, અથવા અમારે વ્યક્તિગત પ્રાથમિકતાઓ માટે તમારામાંથી કોઈ એકને, જેમ અત્યારે ઘણા કારણો છે, અત્યારે બધા ચેલાઓમાંથી તમારા 2 દ્વારા તમને આપેલ તથ્યોની સામાન્ય ભલાઈ માટે ઉપયોગ થવાની સૌથી વધુ સંભાવના છે. તમારે તેને પૂરા સમાજના લાભ માટે વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરી અને એપ્લાય કરવાના છે અને કામ પર લેવાના છે અને ફરી નિયોજિત કરવા માનવું જોઈએ, બધી સારી રીતે હોય તે રીતે. જો તમે એટલે કે મિસ્ટર સિનેટ તમારા ઉચ્ચ અથવા તો જેને એમ કહીએ કે ટ્રાન્સ હિમાલયન મિત્રને ખુશ કરવા હોય તો 1 મહિનો લાંબુ કે ટૂંકું લખાણ તમારા મેગેઝિનમાં દરરોજ છાપજો અને પેમ્ફલેટ પણ બહાર પાડજો. આ ઉપરાંત મિસ્ટર સિનેટ પાસે જે પત્રો હતા તે બધાને પુસ્તક રૂપે પ્રકાશિત કર્યા, જે પુસ્તકનું નામ હતું ધ મહાત્મા લેટર્સ ટુ એપી સિનેટ. થેન્ક યુ. थैंक यू रमेश जी. अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं नवीन जी को. नवीन जी के बारे में चंद शब्द. नवीन कुमार जी 1970 यानी 51 साल की थियोसॉफी सोसाइटी के सदस्य हैं. 51 साल से
ये उत्तर प्रदेश में पले बड़े और पढ़ाई भी आपने वहीं से की, फिर सर्विसेज ज्वाइन की। उस समय वो आनंद लॉज से जुड़े थे। आप IAS बनकर सर्विसेज के लिए महाराष्ट्र आए और कार्यकाल के दौरान सांगली लॉज से भी जुड़े रहे और पुणे लॉज से भी जुड़े। आप महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार में IAS के सदस्य के रूप में कार्यरत रहे हैं। 40 वर्ष तक कार्य कर 2011 में उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र की पद से रिटायर हुए और फिर आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे कुछ सालों तक। कई ओहदों पर काम किया, कई जगह पर पोस्टिंग हुई। 7 इंटरनेशनल कन्वेंशन इन्होंने थियोसॉफी के अटेंड किए हैं, जिसमें अलियार, वाराणसी है, पेरिस है, न्यूयॉर्क और सिएटल में भी भाग लिया है। और बस रिटायरमेंट के बाद वे मुंबई में है, लेकिन वो कतई रिटायर नहीं है। वो बहुत सक्रिय हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की ब्लेवेस्की लॉज में, जिसमें वे नियमित रूप से कार्य करते हैं और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और हमें बहुत प्रेरणा देते रहते हैं। आइए नवीन जी, अपना संक्षिप्त में हिंदी में इसका सारांश कीजिए। धन्यवाद तरल जी। आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें नंद कुमार जी का जो वक्तव्य हुआ उसका हिंदी में भाषांतर करने में मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, क्योंकि जैसा आपने कहा, मैं तो इलाहाबाद का लड़का हूं और इलाहाबाद में रहते हुए AP सिनेट साहब के बंगले को मैं कई बार विजिट कर चुका हूं, जो पुराना बंगला था, जिसमें कि आपने नंद कुमार जी ने ये जिक्र किया कि HPB और ऑलकॉट भी जाकर 2 बार ठहरे थे। और जब मैं वहां था तब उनके बंगले में एक बहुत महान थियोसोफिस्ट उनके उस बंगले में एक बहुत चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, जिसका नाम था सेवा सदन, और उनका नाम था श्री राम भारती। लेकिन अब क्या स्थिति है ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो भी जब मैं विजिट करता था उसको भी अब लगभग 60 साल गुजर गए हैं। तो अब तो कोई आज की मीटिंग में सुषमा श्रीवास्तव हैं, वो ही शायद पता लगाकर बता सकती हैं कि वो बंगला अभी भी है या नहीं है। इसके अलावा जो नंद कुमार जी ने जिक्र किया कि वो मेयो हॉल में जो मीटिंग हुई थी, वो मेयो हॉल तो अभी भी है और मैं वहां अनेक बार जा चुका हूं। तो अब भाषांतर पर आ जाते हैं। सिनेट साहब का जन्म 1840 में लंदन में हुआ और बहुत जल्दी ही जब वो तरुण थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया और उनकी रुचि शुरू से ही संपादकीय गतिविधियों में बहुत अधिक थी और वे ब्रह्म विद्या यानी थियोसॉफी के क्षेत्र में इसलिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं कि उनको सबसे अधिक महात्मा लेटर्स का आदान प्रदान हुआ, जो कि पब्लिक नॉलेज में आ गए हैं। और वो थियोसॉफिकल सोसाइटी एडीआर के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। उनकी पत्नी का नाम था पेशेंस और उन्होंने 1859 से लेकर 1870 तक मॉर्निंग क्रॉनिकल्स, मैनचेस्टर गार्डियन, स्वीडन के डेली न्यूज और आयरलैंड के डेली टेलीग्राम इत्यादि अनेक समाचार पत्रों में अपनी संपादकीय कुशलता का प्रयोग किया। और उसके पश्चात फिर वो 1872 से 1883 तक भारत में रहे और उस कार्यकाल के दौरान उनका जो सामाजिक जीवन और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही और वो वहां पायोनियर के एडिटर बन गए थे। पायोनियर एक बहुत वहां का प्रसिद्ध न्यूज़पेपर था उस जमाने में। और जब उनको ये पता लगा कि ब्लेवेट्स्की, कर्नल ऑलकॉट और HP ब्लेवेट्स्की वहां आ गए हैं, तब उन्होंने उनसे ये विनती की कि वो उनसे मिलना चाहेंगे।
और इस प्रकार वो लोग जो थे उनके मेहमान बनकर इनके बंगले में, जैसा कि नंद कुमार साहब ने बताया, कई सप्ताह तक उनके मेहमान बनकर रहे। और उसी दौरान A.O. ह्यूम के अध्यक्षता में मेयो हॉल में एक बड़ी मीटिंग हुई। और इसी प्रकार एक दूसरा भी उन्होंने विजिट किया, ब्लेवेट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने, लेकिन वो उनके शिमला वाले घर में था। और जैसा कि बताया गया कि उस समय ऑकल्ट वर्ल्ड पुस्तक जो थी उसके लिखने में वो व्यस्त थे। और उसी समय महात्माओं से जो उनका पत्र व्यवहार था वो शुरू हुआ। और उसकी शुरुआत इस प्रकार हुई कि उन्होंने मैडम ब्लेवेट्स्की से ये विनती की कि आप किसी प्रकार हमारा पत्र जो है ये महात्माओं जो कि उस समय अज्ञात थे उनके पास पहुंचाएं। और उनकी मदद से और कुछ शायद ईश्वरीय प्रेरणा से 1800 से लेकर 1885 तक महात्मा कुथुमी से उनका पत्र व्यवहार हुआ। और ये पत्र जो थे ये मतलब उनके जो शिष्य थे उनके माध्यम के द्वारा किसी प्रकार से मटेरियलाइज करके उनके पास पहुंचते थे। और नंद कुमार जी ने उनका जो पहला साक्षात्कार हुआ महात्मा के से, उसका भी बड़ा सुंदर विवेचन किया है। और वो जो थे जब वो आए, जब उनसे एस्ट्रल बॉडी में उनका साक्षात्कार हुआ और अपने जो भौतिक शरीर को छोड़कर जैसे ही वो एस्ट्रल बॉडी में आए तो वो एक दूसरे बगल वाले कमरे में पहुंच गए और वहां पर मास्टर सेरापिस भी उस समय उपस्थित थे। और महात्माओं ने, जैसा कि पहले बताया गया है, उनसे 100 से भी अधिक पत्रों का आदान प्रदान हुआ। और उस समय जो महात्माओं ने कहा था एपी सिनेट के बारे में कि आप और A.O. ह्यूम जो हैं, जो मैं ये आपको जानकारी पत्रों के माध्यमों से दे रहा हूं, इसका आप निश्चित ही जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऐसी उन्होंने आशा व्यक्त की थी। और ये आशा एकदम उनकी सत्य साबित हुई, क्योंकि ये जो महात्मा लेटर्स जो पब्लिश किए गए हैं, इससे जन साधारण को महात्मा क्या सोचते हैं, महात्माओं के प्रमुख उपदेश क्या हैं, और हम लोग अपने दैनिक जीवन में महात्माओं की उपदेशों का अंतर्भाव कैसे करें, इस विषय में अत्यंत ही विस्तृत और सरल भाषा में इसका विवेचन किया गया है। तो यही मैं समाप्त करता हूं और मैं तरल जी से विनती करता हूं कि अब वो दूसरा फेज शुरू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन कुमार जी। और मैं नंद कुमार राउत से निवेदन करूंगा कि वे अपना पार्ट 2 द्वितीय भाग आरंभ करें। धन्यवाद। अनम्यूट कर लीजिए सर। The second half part of this discussion is, in 1879, Clive Rattigan and his partner purchased the Pioneer from Allen, and the new proprietor communicated to Mr. A.P. Sinnett that the newspaper, the Pioneer,
would no longer need his services. After Sinnett was announced that he was going to be dismissed from the Pioneer in 1883, the Mahatma Kuthumi KH, he made an effort to engage Mr. Sinnett in organizing a newspaper called the Phoenix, supported by the Indian capital. AP Sinnett left for England, hoping to return to India for his project. But after considerable efforts to raise the funds needed, the enterprise had to be abandoned for lack of support from the Indians. Means he could not get the support from the Indians at that time, financial support. On 11th September 1883, Master KH cabled to Mr. AP Sinnett in England, releasing him from his promise not to accept another position of employment. So he was freed. AP Sinnett was freed from Master's promise. Then Mr. and Mrs. AP Sinnett left Allahabad on their way to England. They first stopped at Calcutta, where Sinnett had an interview with the British Viceroy of India, and his name was Lord Ripon. And then they continued to Adair. At this time, he was engaged in writing his new book, Esoteric Buddhism. And on March 30, 1883, Mr. and Mrs. Sinnett sailed for Europe and reached England on 26th April 1883. By this time, his second book, Esoteric Buddhism, was published. In April 1883, AP Sinnett became a member of London Lodge. At this time, he was acquainted with Charles Webster Leadbeater. They became good friends, and their friendship lasted the rest of his life. In January 1885, Mr. Sinnett became the president of London Lodge. That year, the correspondence with the masters was stopped, partly due to HPB's bad health and partly because of his non-supportive attitude in regards to the Hodgson report. In 1886, the proprietors of the Pioneer decided to establish a London office, and the task was entrusted to AP Sinnett. He was in charge of this office for a couple of years until the proprietor himself took over. Mr. Sinnett regarded that he maintained his touch with the master throughout his life. C. Jinraj Dasa wrote about this as follows. Mr. Sinnett never realized that he had broken link with the master.
though he received no letters, he was thoroughly convinced that the master still communicated with him through a lady, a clairvoyant, whom he used to put weekly into trance. Whenever she stayed with his wife and himself. When a few days later, this lady could no longer act as master's mouthpiece. So, Happy Sinnett sought another, and later another, and later another. He used to find another clairvoyant persons. Happy Sinnett said his book, The Occult World, described the circumstances under which he came into touch with the great adept master, from whom he afterwards obtained the teachings which enable him to write his later book, Esoteric Buddhism. Happy Sinnett also said that the master KS told him of his previous Roman and Egyptian lives some 4,000 years ago. He was living in Egypt, mainly in Memphis, and was attached in the capacity of a priest to one of the temples. He was incarnated in Rome in the 1st century AD with all favors of fortune around him, wealth and high rank also. From January 1904 to June 1907, Sinnett edited a monthly magazine called Broad Views, dealing mostly with current events, sociology, philosophy, and world cultures. In 1907, the president founder Henry Steele Alcott, he died. Then Sinnett became invested with the authority of the presidential office until Dr. Annie Besant was elected as the second international president of the Theosophical Society, ADA. On May 1908, his son Denny died of tuberculosis at the age of 31 years. In the same year, Sinnett's wife Patience died of cancer at midnight on November 9th. During a series of sitting with the clairvoyant friend Robert King from 1909 to 1914, Sinnett eventually was able to communicate with his wife Patience, with Mahatma Kuthumi and others. Until the end of his life, Sinnett continued to be active in the Theosophical Society work. He wrote, lectured all over the England. A.P. Sinnett died on 26th June 1921 at the age of 81 years. On his death, the President Dr. Annie Besant pointed out that our brother was with the master he loved and served. A.P. Sinnett wrote many books. I am adding
at the 11th hour, he wrote the following books: The Occult World in 1881, Esoteric Buddhism in 1883, Karma in 1885, then Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 1886, Rationale of Mesmerism in 1892, Growth of the Soul in 1896, Occult Essays in 1905, Married by Degrees 1911, In the Next World 1914. This In the Next World is actual description of personal experience by some who have passed on. Then he wrote The Spiritual Powers of the War in 1915. Then Unseen Aspect of War in 1916. Then Superphysical Science 1919. Then the early days of Theosophy in Europe. So these are these books, 12, 13, 14 books he has written. So these books and these are his works he contributed to the Theosophical Society. So today I end at this point, I end my chapter 2. Thank you, sir. Thank you so much, Rautji. And now I will invite Rameshji to please say part 2. Thank you, Rautji. Thank you. ભાગ બીજો 1879 માં ક્લાઇવ રેટિંગ્ટન અને એમના ભાગીદારોએ પાયોનિયર મેગેઝિન પત્રકાર ખરીદી લીધું ને તેમના માલિકે મિસ્ટર સેનેટને જણાવ્યું કે હવે એમની સેવાની જરૂર નથી. 1883 માં જ્યારે મિસ્ટર સિનેટને ડિસમિસ કરવા સુધીની વાત આવી ત્યારે માસ્ટર્સ KHએ એક પ્રયત્ન એવો કર્યો કે જેથી ઇન્ડિયન કેપિટલના સમાચાર પત્ર ધ ફોઇનિક્સમાં જોડાવા માટે એમને પ્રયત્ન કર્યો અને એ માટે ફંડ્સ ઊભું કરવા માટેનો આખો પ્રયત્ન કર્યો. મિસ્ટર સિનેટ આ પ્રોજેક્ટ માટે ઇંગ્લેન્ડથી પરત આવવાનું વિચારતા પણ હતા, પણ પછી ખબર પડી કે ભારતમાં બરાબર નાણાંની વ્યવસ્થા નથી થઈ શકી અને એ મેગેઝિન નથી થઈ શકે એમ હતું. એટલે માસ્ટર્સે મિસ્ટર સિનેટને પણ એમના વચનમાંથી મુક્ત કર્યા. મિસ્ટર સિનેટ ઇંગ્લેન્ડ જતા પહેલા કલકત્તામાં તેમની મુલાકાત બ્રિટિશ વાઇસરોય ઓફ ઇન્ડિયા લોર્ડ રિપન સાથે થઈ અને તેઓ અડિયારમાં રોકાઈ ગયા. આ સમયે તેઓ તેમનું નવું પુસ્તક એસોટેરિક બુદ્ધિઝમ લખવામાં વ્યસ્ત હતા. 30 માર્ચ 1883 રોજ મિસ્ટર અને મિસિસ સિનેટ વહાણ દ્વારા નીકળ્યા અને 26 એપ્રિલ 1883 થી નીકળીને 30 માર્ચ 1883 રોજ નીકળ્યા તો 26 એપ્રિલ 1883 રોજ પહોંચ્યા. એટલે કે તે વખતે ઇંગ્લેન્ડ પહોંચતા લગભગ 27-28 દિવસ થતા હતા. આ સમયે તેમનું પુસ્તક ધ એસોટેરિક બુદ્ધિઝમ પ્રકાશન થયું હતું. એપ્રિલ મે 1883 AP સિનેટ લંડન લોજના સભ્ય બન્યા. આ સમયે તેમની મુલાકાત ચાર્લ્સ વેબસ્ટર લેડબીટર સાથે થઈ. તેઓ મિત્ર બન્યા અને તેમની મિત્રતા જીવનના અંત સુધી ટકી રહી. અહીંયા જણાવી દઉં કે લેડબીટરજી થિયોસોફી તરફ વળ્યા. તેમાં ધ ઓકલ્ટ જે પુસ્તક હતું સેનેટનું
એ ઓકલ્ટ વર્લ્ડ એ પુસ્તકે સારો ભાગ ભજવ્યો હતો. જાન્યુઆરી 1885 મિસ્ટર સિનેટ લંડન લોજના પ્રમુખ બન્યા. આ વર્ષે માસ્ટર સાથે પત્ર વ્યવહાર આંશિક રીતે રોકાઈ ગયો, કારણ કે એચવી બ્લેવેટ્સ્કીની તબિયત સારી ન હતી અને કંઈક અંશે તેમના પર્સન રિપોર્ટ બાબતમાં અસહકાર ભર્યા વર્તનનું કારણ પણ હતું. 1883 ધ પાયોનિયર સમાચાર પત્રએ લંડનમાં ઓફિસ ચાલુ કરવાનું વિચાર્યું અને જેણે એક વખત ના પાડી હતી એને પાછા બોલાવ્યા અને મિસ્ટર સિનેટને એની જવાબદારી સોંપી. આ પદ પર માલિકે હવાલો લઈ લીધો ત્યાં સુધી તે બે એક વર્ષ રહ્યા. મિસ્ટર સિનેટ માનતા હતા કે તેમણે જીવનભર માસ્ટર્સ સાથે સંબંધ ટકાવી રાખ્યો છે, પણ આ બાબતમાં શ્રી જીનરાજદાસ શું કહે છે એ પણ આપણે જાણવું જોઈએ. શ્રી જીનરાજદાસજી કહે છે કે મિસ્ટર સિનેટને ક્યારેય રમેશજી તમે અનમ્યુટ થઈ ગયા, સોરી. મ્યુટ. તેમને વધુ પત્રો ન મળ્યા તો પણ એ ન સમજી શક્યા. તેમને એ દ્રઢપણે સમજતા હતા કે માસ્ટર્સ હજુ પણ તેમની સાથે સંપર્કમાં છે અને તેઓ તેમની પત્ની સાથે હોય ત્યારે એક બેન જે આવતા તેને એક ક્લેરવોયન્ટ હતા તેમ માનતા અને તેના દ્વારા આખા પ્રયોગો ચાલુ રાખતા. કેટલાક વર્ષો પછી એ બેન પણ માઉથપીસ ન બની શક્યા ત્યારે એમણે બીજા બેનને લીધા, ત્યાર પછી બીજાને, એમ ચાલતું કરતા રહ્યા. એ પોતાની રીતે આખો પ્રયત્ન કરતા રહ્યા, પણ જીનરાજદાસનું કહેવું એમ છે કે એમના માસ્ટર સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો. એપી સિનેટ કહેતા તેમનું પુસ્તક ધ કરંટ વર્લ્ડમાં તેઓ કેવી રીતે ગ્રેટ એડેપ્ટ માસ્ટર્સના સંપર્કમાં આવ્યા તેની માહિતી આપી છે ને તેમની પાસેથી મેળવેલ જ્ઞાનના સહાયથી જ તેમણે તેમનું પુસ્તક ધ એસોટેરિક બુદ્ધિઝમ લખ્યું છે. મિસ્ટર સિનેટ કહેતા કે માસ્ટર કહે છે તેમને તેમના પૂર્વજન્મમાં જ્યારે તે રોમન ઇજિપ્તમાં હતા ત્યારની વિગતો જણાવી હતી. આશરે 4000 વર્ષ પહેલા તેઓ ઇજિપ્તમાં રહેતા હતા, મોટાભાગે મેમ્ફિસમાં, અને તેઓ એક પાદરી તરીકે પણ કાર્યવાહી કરી રહ્યા હતા. તેઓ પૂર્વજન્મ ઇજિપ્તમાં 1લી સદીમાં એમનો પૂર્વજન્મ થયો હતો એવું કે એમને જણાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે તેમને ખૂબ સગવડતાઓ મળી હતી, ઘણી મિલકતો અને ઉચ્ચ પદ બી મળ્યા હતા. જાન્યુઆરી 1904 થી જૂન 1907 સિનેટજી એક માસિક મેગેઝિન જેનું નામ બ્રોડ વ્યૂ હતું તેમાં તંત્રી તરીકે હતા. એ મેગેઝિનની અંદર તાજેતરના બનાવો, સમાજશાસ્ત્ર, તત્વજ્ઞાન અને વિશ્વની સંસ્કૃતિ વગેરેનું વર્ણન આવતું હતું. 1907 સંસ્થાપક ને પ્રમુખ હેનરી ઓલકોટના અવસાન પછી શ્રી સેનેટને અડિયાર થિયોસોફી પ્રેસિડેન્ટની ઓફિસનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો હતો, જે ક્યાં સુધી રહ્યો કે જે થિયોસોફિકલ સોસાયટી અડિયારના આંતરરાષ્ટ્રીય બીજા પ્રમુખ તરીકે મેડમ એની બેસન્ટ ચૂંટાયા ત્યાં સુધી એ હવાલો એમની પાસે રહ્યો હતો. 11 મે 1908 રોજ તેમના પુત્ર ડેનીનું ટીબીના કારણે અવસાન થયું, ત્યારે એની ઉંમર માત્ર 31 વર્ષ હતી. અને હજુ એમાંથી બહાર આવે તે પહેલા 9મી નવેમ્બરે તેમના પત્નીનું પણ અવસાન થયું, કેન્સરથી અવસાન. વર્ષ 1909 થી 14 સુધીમાં સંખ્યાબંધ બેઠકો એમણે ક્લેરવોયન્ટ મિત્ર રોબર્ટ કિંગ સાથે કરતા અને એ એમ માનતા કે હજુ પણ પત્ર વ્યવહાર ચાલુ જ છે. શ્રી સિનેટજી તેમના પત્ની પેટિયાસ, માસ્ટર કુતુમી ને અન્ય સાથેનો સંદેશો વ્યવહાર પણ કરી શકતા હતા એવું માનતા. શ્રી સિનેટજી તેમના જીવનના અંત સુધી થિયોસોફિકલ સોસાયટીની સાથે સક્રિય રીતે સંકળાયેલા રહ્યા. તેઓએ આખા ઇંગ્લેન્ડમાં લખાણ ને પ્રવચનો દ્વારા થિયોસોફીને જીવંત રાખતા રહ્યા. શ્રી એપી સિનેટનું અવસાન
તારીખ 29 જૂન 1921 રોજ થયું હતું. તેમના અવસાન સમયે તેમના કાર્યને બિરદાવતા અડિયાર આંતરરાષ્ટ્રીય થિયોસોફિકલ સોસાયટીના બીજા પ્રેસિડેન્ટ મેડમ એની બેસન્ટે જણાવેલ કે આપણા ભાઈ શ્રી માસ્ટર્સ સાથે હતા ને તેમણે પ્રેમ આપ્યો છે ને સેવા કરી છે. આ ઉપરાંત જે કેટલાક પુસ્તકોનું વર્ણન એમણે આપ્યું છે પછીથી આપ્યું છે એટલે હું નથી કહી શકતો, પણ છતાંય બુદ્ધિઝમ વિશે જે નવીનભાઈએ વાત કરી એ પણ એક જાણવા જેવી ખરી. થેન્ક યુ. थैंक यू सो मच रमेश जी, तमें बहुत सुंदर रीते कहूँ. और नवीन जी, अब मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप धन्यवाद तरल जी. जैसा कि दो वक्ताओं ने कहा है वही मैं हिंदी में इस प्रकार कहूंगा कि 1983 के आसपास पायनियर द्वारा ये उनको संदेश मिला कि अब उनके सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, और इसकी वजह से निश्चित ही उनको थोड़ा सा उनके जीवन में आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से अस्थिरता आई होगी. और लेकिन उनको मदद करने के हेतु महात्मा KH ने प्रयत्न करके उनको एक नए समाचार पत्र फिनिक्स की शुरुआत करने की प्रेरणा दी. परंतु उस दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान से उसके बारे में अधिक सहकार प्राप्त न होने के कारण उसे भी उन्हें उस प्रयत्न को भी उन्हें छोड़ना पड़ा. और फिर अंततः फिर उन्होंने इंग्लैंड जाने का विचार किया, और 11 सितंबर 83 को महात्मा KH ने उन्हें इस वचन से मुक्ति दी कि अब आप किसी सेवा में रत न भी हों तो चलेगा. अतः उन्होंने 1883 के आसपास इलाहाबाद छोड़ा, और लंदन जाने के लिए जब वो कलकत्ता के द्वारा माध्यम से जा रहे थे तो वहां पर उनकी भेंट उस समय के भारत के वाइसरॉय लॉर्ड रिपन से हुई, और फिर वो उनके साथ ही एडीआर गए. और इस दौरान जो उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है एसोटेरिक बुद्धिज्म, उसकी रचना का प्रारंभ हो गया. मार्च 83 में वो ब्रिटेन के लिए रवाना हुए, और वहां जाकर वो लंदन लॉज के मेंबर बन गए, जहां पर उनकी मुलाकात C.W. लेडबीटर से हुई, और जो उनके जीवन पर्यंत उनके मित्र रहे. जनवरी 1885 से AP सिनेट साहब लंदन लॉज के अध्यक्ष बने, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय से फिर उनका पत्र व्यवहार महात्माओं से थम सा गया. और उसका कारण ये बताया जाता है कि दो कारण बताए जाते हैं कि HP ब्लेवेट्स्की का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और शायद वो इस बात महात्माओं से पत्र व्यवहार करने के विषय में बहुत सपोर्टिव नहीं थी. इसी दौरान 1886 में पायनियर के जो प्रोप्राइटर थे हिंदुस्तान में, उन्होंने लंदन में एक अपना कार्यालय शुरू किया, और उसमें AP सिनेट साहब को दोबारा काम करने का
अवसर मिला जो लगभग 2 वर्ष चला। और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद भी वो महात्माओं के संपर्क में रहे, पत्रों द्वारा नहीं, लेकिन सी जिनराजदास जी के कथनानुसार वो संबंध उनका आत्मिक माध्यमों के द्वारा होता रहा। कुछ समय एक महिला थी, उनके थ्रू होता रहा, और जब वो उपलब्ध नहीं रही तो वो इस प्रकार के माध्यम के द्वारा महात्माओं के संपर्क में रहे। और महात्माओं ने ये भी उनको बताया कि उनके पिछले 2 जन्म क्रमशः मिस्र और रोम में हुए थे। मिस्र में वो एक पुरोहित थे पहली सेंचुरी में किसी मंदिर के, और रोम में वो उसके बाद एक धनी और उच्च पद पर आसीन अधिकारी थे। 1904 से 1907 के दौरान उन्होंने एक मासिक का संपादन प्रारंभ किया, और जो कि 1907 तक चला, क्योंकि उसके बाद जब हेनरी स्टील ऑलकॉट साहब का स्वर्गवास हुआ तो एनी बेसेंट के अध्यक्ष पद पर आसीन होने के पहले तक वो एक प्रकार से एडीआर में इंटरनेशनल थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालते रहे। 1908 के दौरान दुर्भाग्यवश उनके पुत्र का निधन हो गया, और उसी वर्ष नवंबर में उनकी पत्नी पेशेंस का स्वर्गवास हुआ। और लेकिन ये ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी से मृत्यु हो जाने के बाद भी किसी प्रकार संपर्क स्थापित करते थे। और इसके पश्चात अंत तक उन्होंने लंदन में रहकर थियोसॉफी के से संबंधित कार्यों में रत रहे, और मुख्यतः लेक्चरों द्वारा, और अंत तक वो व्यस्त रहे। और फिर अंततः 26 जून 1921 में उनका स्वर्गवास हुआ। और उनके स्वर्गवास होने के पश्चात एनी बेसेंट द्वारा ये कहा गया कि अब एपी सिनेट साहब अपने महात्माओं के पास पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार यह एक अत्यंत थियोसॉफी की दृष्टि से अत्यंत मूलवान व्यक्ति, अत्यंत डिवोटेड व्यक्ति की ये आज मुख्य हम लोगों ने जीवनी पढ़ी। और सच पूछें तो इनके जो, जैसा कि महात्माओं ने कहा था कि आपके जो ये पत्र हम लोग दे रहे हैं, हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं, इसका आप लोग जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वाकई में वो कथन सत्य हुआ। क्योंकि मास्टर्स लेटर टू एपी सेनेट का बहुत लोग वाचन करते हैं, और उसमें बहुत ही अनेक बातें, अनेक उपदेश, छोटी छोटी बातों पर विवेचन है, जिसको पढ़ने से वास्तविक लाभ हो सकता है। धन्यवाद। मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तीनों वक्ताओं से ये निवेदन करूंगा कि अगर कुछ और भी ऐड करना रह गया हो तो वे कह सकते हैं। और उसके बाद हमारे बहुत सारे आज थियोसॉफिस्ट आए हुए हैं यहाँ, वे भी कुछ ऐड करना चाहते हो। एनसी कृष्णा जी हैं, चंद्रकांत शिंदे जी हैं, हर्षवर्धन सेठ जी हैं, और भी कोई डॉक्टर कमल मनोहर, सुषमा श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी ऐड कर सकते हैं। पहले मैं आज के जो वक्ता है उनसे आग्रह करूंगा कि वे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जरूर करें। नहीं सर, कुछ करना नहीं। अच्छा, हेलो। तो फिर
हेलो, हाँ जी, नहीं, मैं कुछ कहना चाहूंगा भाई। हाँ बोलिए रमेश जी। हाँ, एक बात यह है कि इन्होंने जो ऑकल्ट वर्ल्ड पुस्तक लिखा, वो पुस्तक से ही C.W. लेडबीटर अट्रैक्ट होकर थियोसॉफी में आए थे। तो थियोसॉफी में ये लाने का जो क्रेडिट है वो मिस्टर सेनेट को जाता है, इलेटर्स के लिए भी है। मगर एक और बात है, क्योंकि जो लेडबीटर जी आए तो उन्होंने भी 3 आदमियों को पहले से ही पहचान लिया था। एक थे सी जिनराज दास, जो उनके पूर्वजन्म में उनके भाई थे, उनको भी उन्होंने ही पहचान के लाए थियोसॉफी में, तो इनका भी एक प्रदान है। दूसरा है क्या, जे कृष्णमूर्ति को भी उन्होंने लाए थे, और तीसरा, ये 3 आदमी को ऐसे लाए हैं। तो ये इसके लिए उनको थियोसॉफी में लाने के लिए बेनेट सिनेट साहब को हमें क्रेडिट देनी ही चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला बहुत अच्छा रहा। थैंक यू जी। हर्षवर्धन जी, चंद्रकांत जी कुछ ऐड करना चाहते हो? हाँ तरल जी, मुझे एक पॉइंट कहना है। हाँ बोलिए बोलिए। जब समय तो अगर आप मास्टर्स लेटर्स टू एपी सीनेट पढ़ें तो उसमें कहीं कहीं ये जिक्र आया है कि एओ ह्यूम और एपी सीनेट दोनों का ही एक प्रस्ताव था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो पहला प्रस्ताव तो उनका ये था कि ये एंग्लो इंडियंस के लिए ही बनाई जाए, लेकिन उसको मास्टर्स ने जब मना कर दिया तब उन्होंने ये प्रस्ताव करने की कोशिश की कि एंग्लो इंडियंस का सेक्शन थियोसॉफिकल सोसाइटी में अलग बनाया जाए और इसकी आज्ञा मांग रहे थे वो लोग। लेकिन उस पर भी मास्टर्स जो थे वो उनको वो प्रस्ताव उनका पसंद नहीं आया। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इशू है जिसका विवेचन आप मास्टर्स लेटर्स टू एपी सीनेट में पढ़ सकते हैं। और तो फिर अंततः फिर वो हो नहीं पाया, लेकिन ये जरूर पता लगता है कि इनकी इच्छा थी कि हम एक एंग्लो इंडियन ब्रांच अलग से बनाएं। तो इससे हम लोगों को ये पता लगता है कि काफी उच्च स्तर पर भी जो रेशियल प्रेजुडिसेस हैं वो बनी रहती हैं। और इसका जो एक हम लोगों को पाठ मिलता है कि भाई उच्च स्तर पर जाना है तो हमें रेशियल प्रेजुडिस को बिल्कुल छोड़ना होगा। तो ये एक सीख उससे हम लोगों को मिलती है। और इस पुस्तक में और भी छोटी छोटी बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें दैनिक जीवन में बहुत फायदा पहुंचा सकती हैं। धन्यवाद। नवीन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हर्षवर्धन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सरल जी, मैं एक बात कहना चाह रही थी। हाँ बोलिए बोलिए। वो ये कहना चाह रही थी कि जो सिनेट साहब थे, सिनेट के द्वारा ही एनी बेसेंट से मतलब ब्लेवेट्स्की की बेंच सिनेट साहब नहीं कराई। ये भी हाँ, क्योंकि उन्होंने सीक्रेट डॉक्ट्रिन का जो मतलब उनको समीक्षा करने के लिए दिया था, उसके बाद ही मतलब एनी बेसेंट अट्रैक्ट हुई थी ब्लेवेट्स्की से। तो ये बात भी कि एनी बेसेंट को जोड़ने का भी एक काम सिनेट साहब ने किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी से और एनी ब्लेवेट्स्की से। ये केवल इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। और तो बहुत अच्छा लगा मतलब सुनकर। धन्यवाद जी। हर्षवर्धन जी या कोई और? हाँ, इफ नोबडी इज देयर टू भी हैं। हाँ, आप बोलिए फिर बाद में, प्लीज। विमल जी हैं, सुषमा साहब। हाँ बोलिए। Just I want to say, as the book Occult Word is mentioned by AP Sinnett, by Ramesh Dudia, really this book AP Sinnett has dedicated to
the master KH. And it is very important because he writes, whose gracious friendship has given the present writer his title to claim the attention of the European world, this occult world. This title or this volume, with permission sought and obtained, is affectionately dedicated to Mahatma KH. This is what he has dedicated this book. Yes, that is the book you are focused, occult world. So one must study this occult world, and it is mainly meant for European, because a lot of things are given, teachings of occult philosophy, etc. So I am not giving any much information. Already you have discussed. I congratulate N.N. Raut, Dodia, and Navin Kumar, all of them. They have explained with all dates and year how AP Sinnett is important in the Theosophical Society, contributed to the Theosophical Society and served humanity at large. And he was very close to C.W. Leadbeater and Colonel Alcott also, besides the Mahatmas. Thank you very much. Thank you. Thank you, Shindeji. Thank you so much. Anyone else? Vimalji? NC Krishna sir is also here if he wants to put in some thoughts. I just like to say that whenever I read the Mahatma letters, what occurs to me at that time is that the texts, what they were trying to explain to the Sinnett and Hume, the complexity of that globes, the revolution of going in waves and all that, उनको इतने जल्दी वो बात समझ में आ जाती है, which requires a very high level of intellectual ability. तो देन उसी महात्मा लेटर्स में ही बाद में आता है कि ओके, इंटेलेक्ट इज इम्पोर्टेंट बट ब्रदरहुड इज इक्वली इम्पोर्टेंट. तो समवेयर बिटवीन इंटेलेक्चुअल ग्रास्प ऑफ थियोसॉफी एंड प्रैक्टिस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब माइंड एंड हार्ट के बीच में द मिडिल पाथ हमको लेके चलना है. तो बट yeah, it is still extraordinary that such a great intellectual person like Sinnett was available also apart from Blavatsky and everyone to understand and write books. बहुत बढ़िया चीज थी. जी बहुत धन्यवाद. Yeah. Let me say something about this particular topic today, which is about the history of our Theosophical Society, so far as our leaders are concerned, so far as the Mahatma letters are concerned, especially this mention of AP Sinnett, letters to AP Sinnett. That is really the wonderful thing in the occult world. Let me congratulate Nand Kumar ji to go deeper into this particular subject. And Ramesh bhai, આપ તો ખરેખર ગુજરાતીમાં હવે મને લાગે છે કે તમારો જે શબ્દ પ્રવાહ છે, શાંત, વ્યવસ્થિતતા, એકદમ મુદ્દાસર જે વાત કરવાનો મને ખૂબ ગમી જાય છે. અને really it is the thing that really we cherish as usual when you speak. और नवीन कुमार जी, आपने हिंदी में जो अच्छी तरह से बताया और आपका अनुभव जो आपने साझा किया अलाहाबाद का, फिर मेयो जो हॉल है उसका, और वहाँ पर जो भी हुआ एपी सिनेट का शिमला में और जगह पर, तो रियली नाउ इन द पर्सपेक्टिव एट प्रेजेंट व्हाट वी लर्न थ्रू दिस लेटर्स, द ऑकल्ट वर्ड, द बुक्स, द राइटिंग मटेरियल्स ऑफ एपी सिनेट, सो व्हाट शुड वी डू? हमें कुछ ऐसा लगता है कि हम जो भी काम अभी कर रहे हैं, दिस इज द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द महात्मा. आप समझिए व्हाई आई मीन टू से दैट. इतने साल हो रहे हैं, इतने लंबे अरसे से हम काम कर रहे हैं, इट मीन्स हम थके नहीं है, हारे नहीं है, निराश नहीं हुए हैं, और हमारे पास वही अभिव्यक्ति है, वही चीजें हैं, हम वो कर रहे हैं और आगे भी हमें करना है. तो एपी सिनेट को जो भी लेटर्स मिले उसमें यही बात आ रही है कि इफ यू आर डिसहार्टन्ड, डोंट बी डिस्पेयर्ड, इफ यू आर होपफुल, गो फर्दर. अभी जो भी चीज हम कर रहे हैं, जो भी जहां भी जिस तरीके से, वेदर वी राइट, वेदर वी
discuss, whether we give lectures, whether we study certain books, our contribution to the propagation of the Theosophical Society, to enhance its purpose and to go through the mission and vision, this thing should go on. So Triveni program enhances this motto, and really through Triveni programs, let us understand this kind of thing, that whatever the study is taken up, we have to do our work in the realm of theosophical world, whether you are the president, whether you are the secretary, whether you are the national lecturer, whether you are the treasurer, whatever the concern is there, it should be with the responsibility. We should not throw away our responsibility. Yes. Whatever the challenges are there, we must do it wholeheartedly, just like AP Sinnett did. So we are really thankful in that way. नंद कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से रमेश भाई और नवीन कुमार जी को मैं बधाई देता हूं, और आगे भी त्रिवेणी में ऐसे प्रोग्राम आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे एक जिक्र याद आया जो नवीन कुमार जी ने किया था सुषमा श्रीवास्तव जी से, अगर वो हैं यहाँ पर और आ सकती हूँ बोलने के लिए, तो नहीं सुषमा जी, होम उनके घर के बारे में कुछ जिक्र किया था आपने। हाँ नहीं तो वो नमस्कार। हाँ सुषमा जी नमस्ते। हाँ बताइए सुषमा जी, आप बोलिए। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ राउत जी को, नवीन कुमार जी को, और गुजराती में जिन्होंने ट्रांसलेशन किया। दूसरी बात ये कि मैंने मेयर हॉल में देखा जहाँ पर कर्नल ऑलकॉट ने लेक्चर दिया था और एयू ह्यूम ने उनको प्रिसाइड किया था, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सामने जो एपी सिनेट का जो घर है उसको भी मैंने देखा। अंदर से जाने का तो मौका नहीं मिला। तो चूंकि थियोसॉफी में इतने रचे डूबे हैं, तो वो जब मैं वहां गई तो वो वाइब्रेशन मैंने फील करा। तो एक तो बात मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। और जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई पत्र पढ़ते हैं, तो जो वक्ता है, जो रचयिता है, जो लिखने वाला है, हमको उन शब्दों से ज्यादा उन शब्दों के भावों और उसकी आत्मा में प्रवेश करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने उसमें व्यक्त भी किया कि जो उन्होंने कहा, क्योंकि यदि हम उसके भाव और आत्मा में प्रवेश नहीं करेंगे और हम उनके खाली शब्दों पर जाएंगे, तो हम वो मैसेज कभी ग्रहण नहीं कर सकते। तो जो आपने ये आज विषय उठाया है और जो वक्तव्य दिया है, जो बात हमारे सामने प्रस्तुत की है, तो मैं सुन रही थी बहुत ध्यान से कि हमको उसका इनर मीनिंग, उसका जो इनर मैसेज है, उस पर जो है कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। मुझे जब आपने बताया कि वो पहले रोम में एक प्रीस्ट थे और उसके बाद वो ग्रीस में, पहले मिस्र में थे, फिर रोम में थे, तो मुझे वो रेजेस की बात आई, 7 रेजेस की बात आई कि कैसे जो ह्यूमन रेज होती है 7, वो कैसे कैसे धीरे धीरे उसको, जैसे फर्स्ट रे में 7 रे के लोग होते हैं तो प्रीस्ट होते हैं, उनमें डॉगमेटिज्म ज्यादा होता है। फिर जब वो फर्स्ट और सेकंड रे की बात होती है तो वो यूनिवर्सल टीचर बनते हैं। तो मेरा ये इंटरप्रिटेशन हो रहा था कि जैसे जैसे आदमी का, ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन होता है, तो वो उसको उस रे उसकी वो डोमिनेंट होती है और उसको वो कार्य सौंपा जाता है। तो हमें लगता है कि वो इन जैसे बताया था जो रोम में थे तो उनको एक बड़े वो लेविश उसमें और सारे उनके वेल्थ और पावर के साथ वो पैदा हुए, लेकिन बाद में उनको जो है और हायर वर्क मिला। तो ये शिंदे साहब ज्यादा उस पर प्रकाश डालेंगे, और जो यहाँ पर हैं कि वो क्या ये ऐसा होता है कि समय के साथ जब जन्म लेते हैं तो उनकी वो रे डोमिनेंट की जाती है वो मैसेज कन्वे करने के लिए। ये प्रश्न मेरे मन में उठा। तो एक तो मैंने अपनी बात कही और मैं प्रश्न का भी उत्तर जो है यहाँ के विद्वान वक्ताओं से जानना चाहती हूँ, खास तौर से शिंदे साहब और एनसी कृष्णा जी के। थैंक यू सो मच। Can I take 2 minutes of your time? I'm Krishna this side. I'm NC Krishna. Can I take 2 minutes of your time? You can go ahead, sir. Yeah. Yeah. Your video is also on. Thank you. Okay.
and most of the earliest students of the Theosophical Society, and a lot of people say the primary source of Theosophy is, there are two things actually. One is the letters from the Masters of the Wisdom. The second, of course, is Sacred Doctrine and other writings of Madame Blavatsky. So they are the two primary sources, they say, of Theosophy. One which Madame Blavatsky received directly from her masters, and she gave it in the form of books and writings. And this, using Hume or using this gentleman, Mr. Sinnett, so much of Theosophy and contents of Theosophy were given to all of us. So this is the primary source. That's one thing. And had it been the case where these people were not doubting the existence of masters, they wouldn't have asked for a lot of tests. In fact, you remember the masters are asked to produce the mail, which would come 15 days later. So all these things they have done because they did not have faith in the masters to start with. So the conversations between Blavatsky and Sinnett led her to believe that these people will be satisfied only with some letters coming from the. So she talked to the masters and masters agreed. And they were always coming through an agent. Say it could be, as sometime back it was said, H.P. Blavatsky or Damodar Mavlankar and people like that, the agents. But these people were very, very particular why masters are not writing to us directly. So still there was that feeling that the master was not communicating with them directly. These are all the things which Sinnett expressed in his letters. So I just would like to say this is the primary source, and most of the instructions given to either Sinnett or Hume are actually instructions to us. Like somebody was talking about, leave all that, shun all that which has to be shunned. And that's how we progress, evolve. So I didn't understand because the language, Hindi, perhaps was just above my grasping. So Sushma ji ka question I didn't understand. So I perhaps have my limitations in that language. Thank you for giving me time. Thank you, Ansi ji. Thank you so much, Krishna ji. Anyone else? हाँ तरल जी, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जैसा कि हर्षवर्धन जी ने उल्लेख किया और उसके बाद थोड़ा सा सुषमा जी ने भी थोड़ा सा उल्लेख किया कि ये सब पढ़ने के बाद हम लोगों का कर्तव्य क्या बनता है। और तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सामने बहुत बड़ा कर्तव्य आ गया है, क्योंकि एचपी ब्लेवेट्स्की का जहां जन्म हुआ यूक्रेन में, वो देखिए इस समय एक बड़े कहना चाहिए रूस के इन्वेजन का शिकार हो रहा है। और रूस का जो ये यूक्रेन के ऊपर हमला है और वहां पर सैकड़ों नर नारी बच्चे मारे जा रहे हैं, इसके मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं टिम बॉयड साहब, उनको हम लोग रिक्वेस्ट करें कि आप प्रेसिडेंट पुतिन और को चिट्ठी लिखें कि भाई we are a society of which favors universal brotherhood, और आप इसको विचार करके युद्ध को फौरन रोकिए। वो रोकें चाहे ना रोकें, शायद वो हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, लेकिन हम अपना कर्तव्य जरूर करें। और उस पत्र की कॉपी और भी जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको भेजी जाए, जिससे कम से कम ये तो पता लगे कि हम लोग एज ए इंटरनेशनल थियोसॉफिकल सोसाइटी हम लोग अपना कम से कम एक ब्रदरहुड के फेवर में एक एडवाइस तो दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस बारे में हम लोगों को विचार करना चाहिए। और मैं शिंदे जी से कहूंगा, शिंदे जी तो एडीआर से संलग्न हैं, आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर ब्रदर शिंदे to request our international president. Navin Kumar ji, we discussed about this.
You And, please discuss. In Please our discuss. executive meeting also we discussed, and we Correct, are in correct. contact with the friends in our Ukraine. So Ukrainian Theosophical Very good, very good. Society is there. They have sent emails, Yes, sir. and we are communicating with them. We are sending them the letters. And Very good. Muhammad also expressed his view that we all are I think praying for the peace. correct, correct. No, instead, of course, praying has to go on, and but I feel We are that sending messages very good, on very WhatsApp messages. very good. Ghana is the representative of that, and Ukraine Theosophical Society, and Very we good. are in contact. Please with consider. Question, Chandrakanji, it's already in process, Naveen Kumarji. Very good. Very good. Share anything? Otherwise, it's almost 8 o'clock. I can request Atulji and Keshwarji to wind up. I don't see anyone. Yogita ji, Aban ji, Praveen ji, everyone is there. But okay, Zina ji is also there. Nisha ji is also there. Yeah. I want to say a few words. Please, your video is off. Well, I haven't read much about these letters, but I was very much interested the way Raut साहब ने और रमेश जी ने और हमारा नवीन कुमार जी ने जो बताया इसके बारे में, my interest has really increased a lot about this. आवाज नहीं दिख रहा. आवाज नहीं आता है? नहीं, आपका आवाज आ रहा है. अच्छा. So you see, that is part of it. But secondly, what Naveen Kumar ji said is very, very right. As it is our Indian duty to do utmost to stop this war. And sitting here, it is very difficult. But as he said, that as the international president, if he can do something. Shinde said that it is already in process through emails and all that. You know, because in between, my connection was lost. That has been done, and Shinde said that already letters are being exchanged. Thank you very much. Because contact, and that is yesterday, in Monday meeting, Naveen Kumar ji was there when we had meeting in our Monday with Army, and we had discussed about this. And very good that this suggestion. No, it's already in process, Abanji. Okay. Thank you very much. Thank you. Ji, to answer Sushma ji's question, I think Sushma ji had a question to Chandrakant ji, or she is left, I think. It's all right. Sushma ji ka question about rays ka hai. There are 7 rays. Yeah. And each ray gets intensified. So it is a different topic. How the rays are exchanging in every life. Okay. So that we will discuss it afterwards. It is maybe you can take it one of that subject. So Atulji, I will request you to go for the end prayers. Okay. કેશવરબેન હવે આપણને શિવોમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન. Yes. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर न वा पंचकोशः न वाक्पाणि पादौ
न चापस्थ पायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. Thank you, everyone. Thank you for participating. Thank you, Thank you, Kumar ji, everyone. Ramesh ji, and of course, Naveen Kumar ji. Absolutely, धन्यवाद. Thank you, sir.